Let's smell heaven. Smell heaven. I love it. Nice. It's based on a very European sort of design, where the bottom bit is where they sell like meat, fruit, vegetables, and so forth. And the upper level is basically where they serve food, restaurants. Okay. They still have food up there on the upper level, but down below is basically just souvenirs. So you can see up here, see all the stairs and so forth, like all the stools. There's a few. There's a food court up there and a few restaurants. Okay. So ये इस मार्केट से पहले एक वेट मार्केट थी. वेट मार्केट का कहने का मतलब कि इस एरिया के बगल में एक मार्केट प्लेस जहाँ पर फ़िश और फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्टली रिवर से आके बिकती थी. तो ये पहले एक वेट मार्केट थी, अभी ये सेंट्रल मार्केट हो चुकी है. यहाँ पर बहुत सारे सोवेनिर्स, एंटीक्स वगैरह चीज़ें मिलती है. अब जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये इसके ऊपर में एक रेस्टोरेंट वाला प्लेस भी है जहाँ पे भी फूड वगैरह मिलता है. तो ज़रूर आइए, ये चाइना टाउन से थोड़ी ही पास में है. मैं इस एरिया का गूगल मैप्स का एक पॉइंट डाल दूँगा, ज़रूर विजिट करें. So we come to a point now where Kuala Lumpur got its name from. River of Life. Yeah. So Kuala Lumpur literally means Lumpur means mud. Lumpur. Yeah, Lumpur in Malay, in English means mud. Okay. So and Kuala means confluence. Okay. So basically, literally, Kuala Lumpur means muddy confluence. Why it's called muddy confluence? Because back those time before here, there's a small pond. Okay. And take away the concrete. Before this is all mud. Everything is like mud because it's the bank of the river. Yes. So basically, Kuala Lumpur derives its name from the meeting of these two rivers. Two rivers, yeah. Okay. Yeah. One is the Gombak River. The other one is the Klang River. Okay. So these two rivers meets up to create the greater Klang River. Okay. So this is where Kuala Lumpur derives its name from. This two rivers. The meeting of these two rivers. Yes. So Alvin बता रहे हैं कि ये जो आपने अभी यहाँ दो रिवर्स की बेस देखे हैं यहाँ पर, जो यहाँ से एक आ रही है और यहाँ से, तो ये दो रिवर जब मिलती है तो यहाँ से उसका नाम, मलेशिया का नाम, कुआलालंपुर का नाम यहाँ से ड्राइव होता है. रिवर ऑफ लाइफ यहाँ पर है, ज़रूर आए यहाँ पर. वेट मार्केट से बाहर निकलने के बाद ये पड़ती है. तो आप ये देख सकते हैं कि वेट मार्केट आपका यहाँ पर है और इस सिग्नल से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये है. सो हम चलते चलते इंडिपेंडेंट स्क्वायर आ गए हैं. in Malay it's called Merdeka. मरेगा. Merdeka means independence. इंडिपेंडेंट स्क्वायर इंग्लिश में, मरेका स्क्वायर मलय में बोलते हैं इसको. बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ पर.
सो हम चलते चलते चाइना टाउन से निकल के ड्राई मार्केट से निकलने के बाद केएल टावर्स भी गए थे, लेकिन केएल टावर्स की वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं किया गया हमें। अभी केएल टावर्स के नीचे हैं एक छोटी सी पार्क के नीचे। अल्विन अभी भी हमारे साथ हैं।